Thank you for joining this space today. The Digital uh, Personal Data Protection Bill is going to be discussed and it's listed for passage tomorrow in the Lok Sabha. It's a bill which is fraught with many problems, as if we look at it from the point of view of citizens. It unfortunately neither protects people's right to information nor their right to privacy. Both of them are fundamental rights as declared by the Supreme Court, and both of them are very important for us as citizens to lead a life of dignity. The right to privacy, the right to not live with surveillance, the right to not have our data, our personal data, misused by big companies for all sorts of purposes, including financial fraud and telemarketing, etc., is something that has concerned citizens. It was supposed to be addressed, these problems were supposed to be addressed through this data protection bill. Unfortunately, we've seen that the draft of the bill, which has now been introduced in Parliament, fails to protect people's right to privacy. Also, the right to information, which came into which became a right, which found a whole process through the Right to Information Act for us to access information, is also sought to be weakened through the Data Protection Bill. Section 8(1)(j) of the Right to Information Act balances people's right to information with their right to privacy, because Section 8 of the RTI Act lists out the exemptions. What are the kinds of information that we can't have as citizens under the RTI law is listed in Section 8. And 8(1)(j) of the law clearly states that personal information which has no relationship with public activity or interest, or would cause unwarranted invasion of the privacy of an individual, unless there is larger public interest, cannot be shared with people under the RTI Act. So the law already protects people's right to privacy. It protects individuals from any kind of vicarious seeking of information about them. And therefore, there was really no need to bring in the kind of amendments that this data protection bill is bringing to the RTI law. In fact, Justice AP Shah committee also said that to protect the right to privacy and to protect and to get a data protection bill, you don't need to dilute or amend the RTI law at all. But we see now that the law is sought to be amended through this bill. So there is a huge danger that both these rights, the right to privacy and the right to information, will be adversely affected if the data protection bill is passed in its current form. The problem is that although the government has held many consultations for over a long period of time on the issue of the data protection bill, but this particular draft, which is now coming, which has been introduced in Parliament, has not been through the rigors of consultation the way it needed to. Many campaigns, including the Right to Information campaign, the National Campaign for People's Right to Information, different campaigns on privacy, the right to food, other campaigns, wrote to METI expressing their problems and asking for a consultation on this bill, to be called for consultations. None of these campaigns, to our knowledge, was called, and the government basically focused primarily on consulting industry and big tech firms. So many of the concerns that we have with the bill as citizens have not been addressed. So it is very important that we have our voices heard, we reach out to our members of parliament, we let the government know that this bill must not pass with the problems and that it currently has. And today we'll have a whole host of speakers who will be talking to us. They're all people who have engaged deeply with
this bill, both from the point of view of the right to privacy and the right to information. We also have many campaigners on the ground who, in different states, are pushing the government to say that this bill must not pass in its current form. I can see many people have joined us, but some are yet to join. So we'll keep inviting them one by one. I'm going to request Deepa Sinha to speak first from the Right to Food campaign. पर उससे पहले बहुत ही संक्षिप्त में मैं हिंदी में बस बताना चाहती हूँ कि डेटा संरक्षण कानून का मसौदा, एक डेटा संरक्षण बिल सरकार ने पार्लियामेंट में लेके आई है, इंट्रोड्यूस किया है, और कल यानी कि मंडे को वो बिल लिस्टेड है डिस्कशन के लिए और उसे पारित करने के लिए, पैसेज के लिए। और ये बिल बहुत ही खतरनाक है हमारी सूचना के अधिकार के लिए और निजता के अधिकार के लिए भी। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि लोगों की निजता के अधिकार को बिल्कुल सुरक्षित नहीं किया जा रहा। सरकार ने अपने पास तमाम तरीके की ताकत रख ली है। वो तय करेंगे कि डेटा फिडुशियरी कौन है, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है जो कि बनाया जा रहा है सारी शिकायतों को सुनने के लिए, वो भी सरकारी नियंत्रण में पूरी तरह से होगा, क्योंकि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन्स हैं, उन्हें सरकार ही नियुक्त करेगी, उनको हटाने का भी पावर सरकार ही अपने पास रखेगी। और इस बोर्ड के पास 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाने का ताकत है। तो मतलब अगर कोई किसी भी डेटा फिडुशियरी को अगर सरकार चाहती है उनके पास डेटा ना हो, पर्सनल डेटा वो ना कलेक्ट कर सके, ना रख सके, ना उसको प्रोसेस कर सके, तो उन्हें इस कानून के तहत टारगेट किया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि ना तो लोगों की निजता प्रोटेक्ट हुई, और साथ ही में ऐसे तमाम लोग, ऐसी संस्थाएं, ऐसे कैंपेन्स जो कि सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, इनकन्वीनियंट फैक्ट्स निकालते हैं, उनके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये प्रहार कानून के जरिए से हो सकता है। साथ ही में ये कानून सूचना के अधिकार कानून को भी संशोधित कर रहा है। धारा 81J जो है सूचना के अधिकार कानून की, उसका स्कोप बढ़ाकर ये कहकर कि अब कोई भी निजी सूचना, धारा 81J अब ये कह रही है कि कोई भी निजी सूचना जो अगर हम चाहते हैं लेना तो वो एग्जेम्प्ट होगी, सूचना के अधिकार कानून में हम उसे ले नहीं सकते, उस दायरे से बाहर निकाल दी जा रही है। तो जो तमाम सूचनाएं लोग इस देश में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए निकालते हैं, अपने अधिकारों को लेने के लिए निकालते हैं, जैसे कि राशन की लिस्टें, राशन के रिकॉर्ड, पेंशन के रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप किसको मिली, कितनी मिली, उसके रिकॉर्ड, ये सारी चीजें लोगों की रीच के बाहर होने का एक बड़ा खतरा इस कानून से आ रहा है। साथ ही में वोटर लिस्ट जो हैं वो लोग कैसे ले पाएंगे और क्या लोगों के बीच उसको मुहैया कराया जाएगा अगर ये बिल आ जाता है, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। तो तमाम तरीके की सूचनाएं जो लोगों को चाहिए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ठेकों की कॉपियां जिसमें ठेकेदार का नाम, पता, ये सब कुछ लिखा होता है, या फिर ऐसे लोग जो लोन्स लेकर फरार हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनके नाम, ये सारी चीजें सूचना के अधिकार कानून में हमारा अधिकार है हम ले सकें। लेकिन अब जो संशोधन आ रहा है इसके बाद ये सूचनाएं लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा, ये उन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये सारी चीजों के कारण जो सूचना, ये जो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा संरक्षण कानून का मसौदा जो सरकार लेकर आई है, जिस पे कल चर्चा होनी है और उसको पारित किया जाएगा लोकसभा में, ऐसा कहा जा रहा है, उस लिस्टेड है वो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। और सबसे पहले मैं दीपा सिन्हा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें 5 से 7 मिनट में। दीपा सिन्हा, दीपा अगर आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें। Thank you, Anjali. Can you hear me? Yes, yes.
Thank you. So there's not much to really add. Anjali has put in all the points, but again, to reiterate some of these. First, I want to start with saying that there is a need for such a bill, that we do need a bill which protects the rights of people and the personal data of people. So if we are opposing it, we are not saying that there is no privacy, or there is no requirement for something that protects our privacy, but that the current form in which this bill is not something that is really making the right to privacy of the common citizen the primary objective, but it seems to be a bill that has been brought in covertly to actually protect the right of the state, firstly, and that also of big companies to continue using personal data for their own gains without proper information or informed consent. And there are many reasons why one can see that this is the way it is. First thing I think of, which clearly betrays what the government's intentions are, is the process in which the bill is being brought, where the final draft of the bill was made public only 2 days back, where it was not even shared with the standing committee, where the consultations did not involve people's campaigns, people's representatives, consumer groups, various groups which would be more representative of the people whose data it claims to protect. तो पहली बात तो ये है कि जो तरीका, जिस तरीके से ये बिल को लाया जा रहा है, और जिन लोगों से बातचीत हुई कि इस बिल में क्या होना चाहिए, उसी से समझ आ रहा है ये किया है. Clearly the bill is interest and not those whose data is being mined by these in power. And this very clearly we see in all the exemptions, in the way in which exemptions have been made, where the state can continue to use data in whatever way it wants, without really taking consent, without informing people the purpose for which the data would be going to be used. Not only is it key government how it will use the data, but the government has sweeping powers to also exempt other private bodies from give other private bodies the similar exemptions, and this we know is quite dangerous. Again, where in the bill itself people are not being consulted, we can see that later during the rules or during the of the bill, there will be no transparency on who is getting exemptions and why. That is one big concerning thing, where the surveillance powers of the state continue to exist while यूजिंग प्राइवेट डेटा ऑफ पीपल. इसी से रिलेटेड तो एक तो है कि सरकार किस तरह से लोगों की डेटा इस्तेमाल करती है, इस पर कोई रोक इस बिल में नहीं है. ऑन द अदर हैंड, the right to information, like Anjali said, is being completely undermined, because now what is private information, that definition is being expanded in such a way on what private personal data is, that most of the data that a lot of right to information, right to food activists have used to help people claim their rights, where people themselves have used this data to claim their rights, will now probably not be easily available for people. And that undermines the right to information, undermines the whole process of holding the state accountability in delivering the rights that have been really hard won through other struggles and other legislations. One thing that I find really concerning, although I'm not very familiar of the global laws, is the whole definition of the data fiduciary. That anybody who holds any personal data becomes a fiduciary, and there is no differentiation between different kinds of data fiduciaries. So, a Google, a Facebook, and a Right to Food campaign, or an activist of a Satark Nagrik Sanghan in one basti, are all equal in terms of the responsibility that they have as a data fiduciary, and also, as far as the bill goes, equal in terms of the penalties they face for violating any of the ominous kind of requirements that the bill. All of us need to learn better on how we collect data, how we take consent of people, how we protect their privacy. At the same time, I think this equating of a huge corporate with, say, an activist group, with a small voluntary group of researchers, is something which again puts different groups of very different levels of power in the same
same level as far as the bill goes. And therefore, we also see this critique from the one side coming that this 500 crore fine is actually nothing for the big companies, and that is not going to stop them from doing the data mining that they do. On the other hand, the same 500 crores can be a huge deterrent for any genuine local organization, group of individuals to be able to collect data, because the costs of meeting these norms and the fear in the current environment on being targeted, not really for violating any right to privacy, but using this as an excuse to target people who are raising difficult questions. This seems to be this is one of the issues of concerns, that this can become an additional tool in the hands of the state to actually get after people for things, basically raising questions and raising issues of accountability. So I think overall, the other points Anjali already made related to this is the one body which is supposed to ensure these things don't happen and protect the rights of citizens is the Data Protection Board. But again, this is something that is going, the way it has been defined in the bill is not, nowhere seems to be an independent body, but something that will be completely controlled by the government again. So overall, just to conclude, that from the reading of the bill and the discussions we've had so far, while it is trying to fill in a vacuum which needs to be filled in, which is that we need to have this legislative guidance on protection of personal data. But in the name of doing that, what the government seems to be doing is to actually protect the right of big corporates and itself to continue collecting personal data and using it for their own interests, while making it more and more difficult for people who are demanding accountability from the state to actually get any kind of data using which they can question. And the process, of course, has been discussed, and it hopefully there will be space in the parliament tomorrow where they would be given chance to discuss this. Otherwise, just the way the bill is being passed itself raises a lot of suspicions on why this hurry without any sort of proper discussion with all stakeholders. I'll end here. Thanks, Anjali. Thank you, Deepa. Uh, I I like the hopeful note on which you ended. We all hope that there will be discussion and debate in Parliament. Unfortunately, ऐसा लग नहीं रहा कि पार्लियामेंट में बिल्स पर जिस तरीके की डिबेट होने की ज़रूरत है वो हो रही है. जिस तरह से डेन ऑफ द हाउस में पास हो रहे हैं बिल्स, it's very concerning, and I agree with you that we really need to see a very strong debate in Parliament, and this bill certainly should not pass in the manner in which it is at the moment, for all the reasons that you have listed. Deepa ने bilingual अपनी बात रखी, इसलिए मैं translation नहीं करूँगी, पर जो एक मुख्य बिंदु रखा है दीपा ने, वो यही है कि ये कानून सरकार ने अपने आप को सशक्त करने के लिए ऐसा लग रहा है कि बनाया है. जो कानून सूचना का अधिकार जिसने लोगों को सशक्त किया है उसे डाइल्यूट किया जा रहा है, और जो लोगों की निजता के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वेलेंस से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बिग कंपनियां जो हैं लोगों का डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो ज़रूरत थी बिल को करने की काम, वो नहीं होता दिख रहा इस बिल के तहत. बहुत बहुत धन्यवाद दीपा. Can I request Apar to please speak? Apar. थैंक यू सो मच अंजलि, अमृता, सभी साथियों को धन्यवाद. देखिए, ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जैसे दीपा बता रही थी, इसकी बहुत ज़रूरत है. पर ये बिल जो है वो हमारी जो प्राइवेसी होती है, जो निजता होती है, ये उसको तो सही तरीके से प्रोटेक्ट करता ही नहीं है. पर जो सूचना का अधिकार है, जो बहुत अहम है और इनफैक्ट प्रिवेसी से जुड़ा हुआ है, मैं समझाऊंगा कैसे है, तो उसको भी काफ़ी तरीके से ये बिल्कुल नाकाम कर देता है. जब भारत का संविधान बन रहा था, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हमारे रखे गए, उसमें जो हमारा सूचना का अधिकार है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आता है और दूसरे अंगों से भी आता है. तो उसके द्वारा हम, जो हमारी सरकार होती है, उसे अकाउंटेबल
कर पाते हैं। बहुत बारी हमने ये सुना है कि आरटीआई के द्वारा ये पता लगाया गया है लोगों के कि उनकी जो पेंशन, राशन, मस्टर रोल में जो नाम है वो सही है या नहीं, उन्हें सही पैसा मिल रहा है या नहीं। और उनसे बहुत सारी संस्थाएं जुड़ जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, इनको पता नहीं होता कि इनके अधिकार जो हैं इन्हें सही तरीके से मिल नहीं रहे। तो जो जानकारी जो मिलती है उसके द्वारा वो किसी भी जनप्रतिनिधि से अपनी बात रख पाते हैं, बता पाते हैं कि कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ मतलब सही काम नहीं हो रहा। और प्रिवेसी जो है वो भी एक ऐसा ही अधिकार इन्हीं लोगों के लिए है बहुत बारी, क्योंकि आज की डेट पे जो इनसे डेटा लिया जा रहा है उस पे भी मुनाफा तो बनाया ही जा रहा है, कंपनियां बना ही रही हैं उस पे मुनाफा, पर सरकार भी वो डेटा यूज करके किसी ना किसी तरीके से उसे इस्तेमाल कर रही है, उसे बेचना भी चाहती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी। बट स्टेट सर्विलेंस भी एक बहुत बड़ा अ, अंग बन गया है कि मतलब हमारा डेटा किस तरीके से कैसे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून होता है उसमें यही नहीं होता कि आप जो हमारा डेटा ले रहे हैं हमें बता के लीजिए। उसमें दूसरे अधिकार भी होते हैं जिसमें हम अपना डेटा सही तरीके से करेक्ट करवा पाते हैं। हम सरकार से ये भी मांग पाते हैं कि जब हमारा डेटा आपने लिया है, कब लिया है, किस चीज के लिए लिया है, और अगर आपने किसी सर्विस, सब्सिडी, प्रोविजन के लिए लिया है तो अब जब आपने ये काम कर लिया है तो हमारा डेटा डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो उस व्यक्ति के आइडेंटिटी के ऊपर दूसरा खाता भी खुल सकता है, उनके खाते जो पहले ही खुले हैं उनके अंदर बैंक फ्रॉड भी हो सकता है। तो इससे बहुत सारे अधिकार आने चाहिए। पर अगर हम ये देखें ये बिल क्या करता है, ये एक चैप्टर में तो बोल रहा है ये सारे अधिकार हैं, पर ये जो एग्जेम्पशंस इन्होंने डाली हैं क्लॉज 17 में, अगर उसको आप ध्यान से देखें उसके अंदर ये सारे अधिकार वापस लिए जा रहे हैं और बहुत वेग क्राइटेरिया में वापस लिए जा रहे हैं। जैसे क्लॉज 17(2) देख लीजिए, उसमें सरकार कोई भी और सरकार के अंग को नोटिफाई कर सकती है और बोल सकती है उस पर कानून लगेगा ही नहीं, और ये कानून पूरी तरह नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि उस डिपार्टमेंट जिसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है उसका एक पर्पस या दो पर्पस है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो उसी के लिए डेटा वो जो ले रही है हमसे उस पे कानून नहीं लगेगा। उस डिपार्टमेंट में पूरी तरह ये कानून नहीं लगेगा, और वो डिपार्टमेंट जब हमारा डेटा ले लेगा तो अगर वो किसी और डिपार्टमेंट को दे दे, जैसे देखिए अगर पेंशन के लिए आप दें अपना डेटा एक सरकार के अंग को, वो अगर डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट हो जाता है तो वो डेटा फिर पुलिस को भी दे सकता है, वो किसी और को भी दे सकता है, तो मतलब बिल्कुल ये कानून के दायरे के बाहर चला जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक्सेम्पशंस है क्लॉज 17(3) में। उसमें जो डेटा फिड्यूशरी बोले जा रहे हैं, जो बहुत पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 17(3) में एक कंपनी को, एक डेटा फिड्यूशरी को या क्लास मतलब कि उसी तरीके की और कंपनियों को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, एंड स्टार्टअप्स, मतलब किसी भी कंपनी सरकार एग्जेम्प्ट कर सकती है। और 17(5) अगर देखें वो कहते हैं कि 5 साल के भीतर, ये कानून आने के 5 साल के भीतर हम इसके अलग अलग अंग, अलग अलग डेटा फिड्यूशरी जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में है उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जेम्पशंस का जो क्लॉज है मेरे हिसाब से, ये जो सारी प्रोटेक्शन है हम जो प्राइवेसी की दे रही है, वो दो हाथ से, एक हाथ से देते हैं और दो हाथ से वापस खींच लेते हैं। इसके अंदर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसी एग्जेम्पशन है जो बोलती है कि एम्प्लॉयर्स, मतलब अगर अगर हमें कोई भी काम दे रहा है, ये कानून उन पे भी नहीं लगता। अब मैं सोच रहा था उस दिन रिया जी के साथ बैठा था, वो ये बोल रही थी, वो रीथिंक आधार से है, वो कह रही है दैट द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल इन इंडिया इज पोटेंशियली द गवर्नमेंट। मतलब कि काम सबसे ज्यादा जो भारत में कोई भी देता है वो तो भारत सरकार ही है। अब भारत सरकार बोल रही है हम पे ये कानून लगेगा ही नहीं जब हम किसी को काम दे रहे हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली ये कैसे लागू होगा। अब देखिए हमने नरेगा की प्रोटेस्ट देखी थी अभी रिसेंटली, क्योंकि नरेगा वर्कर्स को बोला जा रहा था कि क्योंकि अटेंडेंस मार्क होगा एक स्मार्टफोन के थ्रू, जिसमें उनकी फोटो ली जाएगी जिससे पता लगेगा वो काम पे आ रहे हैं या नहीं। देखिए किसी भी व्यक्ति की फोटो ऐसे लेना अटेंडेंस मार्क करने के लिए, एक इट्स अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्निटी, मतलब कि पर उससे और भी बाधाएं आ जाती हैं, ऐसे कि उनका डेटा जो डाला जा रहा है उसमें उनको कंसेंट नहीं मांगा जा रहा, उनसे ये नहीं बोला जा रहा कि अगर हम आपको काम दे रहे हैं हम आपकी हर रोज एक तस्वीर खींचेंगे
सोचिए आपको कैसा लगेगा। अगर आपको ये भी लगे ये बहुत छोटी चीज बोल रहा है अपार, ये सोचिए कि आंध्र प्रदेश में फेशियल रिकग्निशन, मतलब कि आपका फेस जो आपके रिकॉर्ड्स में चढ़ा है उसी से मैच होना चाहिए, और ये अटेंडेंस सिस्टम टीचरों पे भी लगाया है, मतलब एप्स भी लगाई हैं। और उधर का स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हमने तो लोकल जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया है, और उसका एक्यूरेसी रेट 100% है नहीं, पर बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब कि आपका वोट देने का अधिकार भी इससे जुड़ा हुआ है। और ये सारी एग्जेम्पशंस अगर एक साथ देखी जाए, मेरे को तो लगता है ये कानून ज्यादा कुछ हमें देता नहीं। ये इनफैक्ट ये कानून एक स्टेटस को एस्टेब्लिश करता है जिसके हिसाब से सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा बल आ जाता है इंडिविजुअल सिटीजन्स के ऊपर। इसमें एक और बात मैं बस और जोड़ना चाहता हूं। सोचिए कि आप सोच रहे होंगे सरकार ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ, अधिकार दिए हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बच ही जाएंगे, सबके सब तो एग्जेम्प्ट होंगे नहीं। और अगर मेरा डेटा ब्रीच हो गया तो फिर तो मैं कंप्लेंट भी डाल सकता हूं। इनफैक्ट अगर हम देखें, अभी एक कार्टून निकली थी जो पेन पेंसिल ड्रॉ ने बनाई थी ट्विटर पे, बहुत लोगों ने लाइक किया था, रिट्वीट किया था। उसपे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर ने बोला वो फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, और एक पूरा एक वीडियो दिया उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो 15 मिनट का है। वो अंजलि जी ने भी रिट्वीट किया है अपने ऑपेड के साथ, मैं कहूंगा वो ऑपेड पढ़िए। पर राजीव चंद्रशेखर जी ने अपने वीडियो में बोला कि ये कानून बनाया जा रहा है भारतीय लोगों के लिए। वो एक फ्रेज यूज करते हैं, डिजिटल नागरिक, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तभी होता है जब उसके ऊपर जब काम नहीं किया जाता या उसका उल्लंघन होता है, एक रेमेडी दी जाती है। मतलब कि आपके पास एक ऐसा अवसर मिलता है आपको कि मेरे अधिकार का हनन हुआ है, मेरे को प्लीज रेस्टिट्यूट करिए। इसके अंदर रेमेडी के क्या प्रावधान है देखिए पहले, और कितनी मिलेगी। एंड रेमेडी इज एसेंशियली मेंट टू रेस्टिट्यूट अ पर्सन, मतलब आपके साथ जो भी आपका घाटा हुआ वो आपको उससे पहले पहुंचा देना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी जेब से 100 रुपए निकले बिकॉज ऑफ ए डेटा ब्रीच, आपको 100 रुपए वापस मिलने चाहिए। रेमेडी इस कानून के अंदर इस तरीके से। क्लॉज 13(3) बोलता है सबसे पहले आपको डेटा फिड्यूशरी, मतलब कोई कॉर्पोरेट कंपनी, कुछ सिलिकॉन वैली कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने आपका डेटा लिया है, या कंसेंट मैनेजर जो है, उसके साथ आपको एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी रेमेडी। ये ज्यादातर अंग्रेजी में ही होगी, ज्यादातर लोग कर नहीं पाएंगे या थक जाएंगे, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलो सोचो कि ये रेमेडी अवेलेबल भी है, एक फोन नंबर दिया गया है, आपने कंप्लेंट डाली, और उसके बाद आप खुश नहीं है क्योंकि आपको कोई रेजोल्यूशन मिला नहीं। तो फिर सरकार ने एक बोर्ड बनाया है जिसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बोल रहे हैं। क्लॉज 27(b) में वो कह रहे हैं आप इधर कंप्लेंट डाल सकते हैं। फिर ये बोर्ड, जैसे दीपा जी ने अभी समझाया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सरकार का ही एक अंग है। वो बोल रहे हैं बिल में वो कॉर्पोरेट बॉडी है, पर अगर आप देखें प्रावधान कि उसकी सर्विस कंडीशंस क्या है, उसमें ऑफिसर्स जो असिस्ट करेंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे, और डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे दे सकती है, यह बोर्ड मेरे हिसाब से सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और सरकार की ही जी हजूरी करेगा। चलो जी सोचिए कि बोर्ड भी आपके फेवर में दे देता है डिसीजन, फिर क्या होता है। फिर कंपनी या पब्लिक डिपार्टमेंट एक अपील डाल सकती है क्लॉज 29 में। इस समय तक सभी थक जाएंगे। अब सोचिए अपील भी वो सरकारी डिपार्टमेंट या कंपनी हार जाती है, तो जो मुआवजा होता है जो 1 करोड़ रुपए हैं, मतलब सोचिए बहुत लोगों का डेटा ब्रीच हुआ है, वो पैसा किसके पास जाता है। क्लॉज 34 बोलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, मतलब उस व्यक्ति के पास नहीं जा रहा जिसकी लॉस हो रही है, ये सरकार के पास जा रहा है। मतलब अगर पब्लिक डिपार्टमेंट में आपका डेटा ब्रीच किया, सरकार एक जेब से पैसे निकाल रही है और दूसरे जेब में डाल रही है। थैंक यू अंजलि जी। I'll wait to listen to the others. Thank you, Apar. बहुत बहुत धन्यवाद. And I think Apar has very clearly explained
the kind of powers that the central government is trying to usurp under this law, trying to make sure that they can decide who will be covered under the ambit of the law, who will be left out. And effectively, what we will be seeing is that those very bodies that are collecting and holding the data of citizens in this country, personal data, who we need to bring under the ambit of the law, are being left out, because the central government is saying they will decide who is a data fiduciary and who is not. They will put out a notification in which they will put out the list of people, organizations, etc., who will be left out. And this includes both government and private entities. So we can imagine the kind of people and entities and departments that the government would like to keep out of the ambit of this law, and others will all be data fiduciaries. Thank you, Apar. We have many people who are deeply interested in this issue and have also indicated that they would like to speak. So in the interest of hearing as many voices as we can, I would request everyone to please limit yourselves to about 3 minutes or so. I'm going to request Mansi from Madhyam to please unmute yourself, because one of the big issues that has come up is that the government has said that this is a finance bill, and there are fears that this might be brought in as a money bill, and then there will be no debate in the upper house of the parliament. So Mansi, if you are there and you can hear us, please, if you could unmute yourself. Yeah, I think we've lost Mansi. We'll come back to her. Mr. Rahul Singh has joined us. He is the Information Commissioner from Madhya Pradesh, and Mr. Rahul Singh has been looking at exemptions under the Right to Information Act, adjudicating on them. हम जानते हैं कि सूचना के अधिकार कानून के तहत धारा 81J का इस्तेमाल करके सरकारें लगातार लोगों को सूचना देने से मना करती आई हैं. इनफैक्ट धारा 81J जो है सूचना के अधिकार कानून की, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई धारा है. एंड आई एम हार्ड प्रेस्ड टू थिंक of any cases where people have complained that under the RTI law their privacy has been harmed, that information has been shared where privacy has been harmed. But I will let Mr. Rahul Singh speak and tell us what he thinks about this bill. और ये जो संशोधित करने की बात है सूचना के अधिकार कानून को इस बिल के जरिए, उसके बारे में आपका क्या राय है? राहुल जी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इनवाइट टू स्पीक एंड देन यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. राहुल जी, कैन यू? या जैसा अधिकतर लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, उससे आरटीआई एक्ट 2005 जो हमारा सनशाइन एक्ट जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा. अभी एज ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जितने मामले हमारे सामने आते हैं, जो हम एडजुडिकेट करते हैं, अपील और कंप्लेन, उसमें सबसे ज्यादा जो मिसयूज सेक्शन है 81J, उसी से हम लोग स्ट्रगल करते हैं. अधिकारी अक्सर जानकारी छुपाने के नाम पर 81J का सहारा लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन. लेकिन सबसे एक अच्छी बात यह है आरटीआई एक्ट में कि उसी क्लॉज में एक प्रोविजन है कि जो जानकारी आप संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं कर सकते हैं, वो जानकारी किसी भी आदमी को देने से मना नहीं कर सकते. एनी इंफॉर्मेशन विच यू कांट डिनाई टू स्टेट असेंबली और द पार्लियामेंट शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन. इट्स वेरी क्लियर. तो कोई एम्बिगिटी रहती नहीं है. मैं अक्सर अपील प्रकरण की सुनवाई करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा यही रहता है कि क्या ये जानकारी आप देने से मना कर सकते हैं विधानसभा को या संसद को? अधिकारी बोलता है नहीं, और मैं लिखित में भी कई बार ले लेता हूं. उसके बाद फिर हम लोग मैटर डिसाइड करते हैं. और सबसे ज्यादा, जैसा अंजलि जी ने कहा, मिसयूज सेक्शन है
क्योंकि अधिकारी इसी की आड़ में जानकारी को छुपाते हैं। अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा? डेटा प्रोटेक्शन बिल के आने के बाद आरटीआई एक्ट अमेंड होगा और अमेंडमेंट के बाद ये जो प्रोविजन है उस क्लॉज में, वो प्रोविजन ही खत्म हो जाएगा जानकारी देने का। हमारे हाथ भी एज ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हमारे हाथ भी बंध जाएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन जो मिसयूज करते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पब्लिक रिकॉर्ड पर जो इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल है या पब्लिक है, इसका एक जो आधार है अभी इस वक्त, वो आधार ही खत्म हो जाएगा। तो जाहिर है कि मुझे लगता है कि ये इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हमने जब ये जो मिनिस्टर हैं, जब इन्होंने इसमें इनवाइट किया था ऑब्जेक्शंस, तो मैंने भी इसमें मैंने ट्वीट भी किया था उनको कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, इट इज अनकॉल्ड फॉर, और इसकी जरूरत ही क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के आड़ में आरटीआई एक्ट 2005 में आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत ही क्या है? तो ये लगता है कि कोई सुनियोजित साजिश की तहत जो है आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, और इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं 2005 से लेकर के 2000 आज हम 23 में हैं, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो दूर दराज गांव हैं, विलेजेस हैं, वह इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहां तक लोग जो है वो एक्ट पहुंच पाए, इफेक्टिव हो, लोगों को उनकी जानकारी नहीं मिल पाए, अभी तक वो नहीं हो पाया है। और इस वक्त फिर ये बीच में ये जब अमेंडमेंट आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये बहुत नुकसानदेह होगा, और ये आम लोगों के जो अधिकार हैं उस पर अतिक्रमण है। अंजलि जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी. I think what Mr. Rahul Singh, who is currently an information commissioner in the state of Madhya Pradesh, he has shared with us the concerns related to the amendments that are proposed through the Right to Information Act, through the Data Protection Bill. Like he said, the section 81J, which relates to the right to protect people's personal information under the RTI Act itself, the scope of which is sought to be expanded now to say that all information that relates to personal information will henceforth be exempt. He's saying that even the existing provision has been very, very widely misused by public servants, by public information officers, to not share information with citizens, which is important for them to hold the government accountable and to fight corruption. So now with these kind of amendments being proposed, this is going to become even more difficult for citizens to access information which they find necessary to be able to access their other rights and entitlements. So thank you very much राहुल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिल जो है, जिसको कल चर्चा और पैसेज के लिए लिस्ट किया गया है लोकसभा में, और हमें लगता है कि हो सकता है कि इसको मनी बिल के रूप में भी बना दिया जाए once it passes the Lok Sabha. We feel that there must be a lot of debate, discussion, consultation on this bill, जिसकी गुंजाइश नहीं दिख रही पार्लियामेंट में, and which is why we are trying to create these spaces for us to voice our concerns and to reach out to people, to reach out to their members of parliament, and raise these alarms that we all share about this bill. We are joined by Mr. Prashant Bhushan. Prashant Bhushan जी ने हमें ज्वाइन किया है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्रशांत कि आप जो हमारा इनविटेशन है टू स्पीक, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, और आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें so that you can speak. जी प्रशांत, अपनी बात अगर आप नेक्स्ट 4-5 मिनट्स में प्लीज रखें, we'll be very grateful. Thank you, Anjali. So I think people have already mentioned the main problems with this data protection bill. I just want to say a little bit about the manner in which these kind of laws are being brought and passed in Parliament. आज देखिए, पहले तो ये होता था कि इस तरह के कानून जो हैं कभी कभी
सार्वजनिक भी किए जाते थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए जाते थे, जहां पर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स या पब्लिक के लोग आकर अपनी बात रख सकते थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने। उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देती थी, फिर उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता था, उसके बाद कानून पास होता था और दोनों हाउसेस में पास होता था। अब तो इन लोगों ने मतलब बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। सार्वजनिक करना तो छोड़िए, स्टैंडिंग कमेटी को छोड़िए, स्टैंडिंग कमेटी को ड्राफ्ट भी नहीं दिया जो बिल ये लोग ला रहे हैं पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में अब तो हम देखते हैं कि कोई डिस्कशन भी नहीं हो पाता, सब हो हल्ले में कुछ बस ये लोग कह देते हैं पास हो गया, पास हो गया। जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ये लोग अमेंडमेंट ले आए, पास कर दिया। उसी तरह से जन विश्वास बिल, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वर्चुअली लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर एनी डैमेज कॉज बाय सबस्टैंडर्ड मेडिसिन। तो अब तो कोई इतने इम्पोर्टेंट कानून पर कोई डिस्कशन नहीं होता, ना स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करे जाते हैं, ना सार्वजनिक करे जाते हैं, पार्लियामेंट में भी कोई डिस्कशन नहीं होता, हो हल्ले में डिवीजन ऑफ वोट्स भी नहीं होता और ऐसे ही पास कर दिए जा रहे हैं। और उससे भी और खराब बात कि बहुत सारे कानून तो मनी बिल घोषित करके और राज्यसभा में लाए ही नहीं जाते। वो कहते हैं मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में पास होता है, जिसका कि मनी बिल से कोई कनेक्शन भी नहीं है, उसको भी मनी बिल के थ्रू पास कर देते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आपने काफी हद तक सुन ली कि इसके जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का अमेंडमेंट किया जा रहा है। और अमेंडमेंट इतना सीरियस है क्योंकि देखिए, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हम मांगते हैं आरटीआई में, उसमें किसी ना किसी का नाम आता है। और अब जहां नाम आएगा वो बोलेंगे कि भाई ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब वोटर्स लिस्ट को भी ये लोग कह सकते हैं। अगर हम वोटर्स लिस्ट मांगते हैं तो वोटर्स लिस्ट को भी कह सकते हैं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों के नाम लिखे हैं इसमें। पहले तो ये था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का एग्जेम्पशन तभी अप्लाई होता था अगर उस पर्सनल इंफॉर्मेशन का पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना ना हो, और उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट का ओवरराइड था। यानी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, तब फिर भी दी जाती थी। और पार्लियामेंट को जो जानकारी दी जानी है वो भी डिनाई नहीं करी जा सकती आरटीआई एक्ट में। लेकिन अब ये सारी चीजें हटा दी जाएंगी और ये बोल दिया जाएगा कि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जिसमें कि कुछ भी आ सकता है। और दूसरी बात जो अंजलि अमृता वगैरह ने लिखा भी है, इसके बारे में बोलती भी हैं कि इसमें शायद बिल में एक प्रोविजन है कि किसी को भी ये लोग डेटा फिड्यूशरी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी अगर आप सूची बनाते हैं आपकी संस्था, जिससे कि उनको आप राशन कार्ड दिलवा सकें, तो आपको डेटा फिड्यूशरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे लिखित में कंसेंट लेनी पड़ेगी कि भाई आप सूची में उनका नाम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो और अगर आप ये ऑब्लिगेशन ना फुलफिल करें तो आपके ऊपर 500 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो एक तरह से बहुत सारे जो एनजीओज हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसा सतर्क नागरिक संगठन करता है, उनको ये कानून क्रिपल कर देगा, उनको अपना काम ही नहीं करने देगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की आईटी सेल वगैरह इकट्ठा करती है नाम वगैरह, तो उसको ये लोग एग्जेम्पशन दे सकते हैं। एग्जेम्पशन देने की पावर सब सरकार के हाथ में है। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में सारी पावर सरकार ने अपने हाथ में रख ली है, किसको डेटा फिड्यूशरी डिक्लेयर करें, किसको एग्जेम्पशन दें, वगैरह वगैरह। सो इसलिए हर तरह से बहुत खतरनाक कानून है और बहुत ही सीरियस बात है कि इस तरह का सीरियस कानून बगैर कोई डिस्कशन के, बगैर सार्वजनिक करे, बगैर स्टैंडिंग कमेटी को भेजे, इस तरह से लाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को पूरी जोर से इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prashant. Prashant has very effectively brought the kind of democracy deficit that we are seeing currently
where we are seeing that the institution of the parliament, which was supposed to ensure that there was a vibrant discussion, debate on various issues and on bills that are brought, which are going to have such a far reaching impact on the rights of citizens of the country. We are watching the government just push legislations without discussion, without debate. And in this particular bill, even the parliamentary committee members have said that they were not shown the bill that was cleared by cabinet and which has now been introduced in the Lok Sabha. It's a very, very serious concern that this bill is going to also amend the Right to Information Act and our ability as citizens to be able to hold the government accountable. Thank you very much, Prashant. And we are going to move to our next speaker. Prateek has joined us. कर्तव्य काल की बात हो रही है आजकल कि हम लोग अपने अधिकारों की कम बात करें, कर्तव्यों की ज्यादा बात करें. तो इस कानून में भी कर्तव्य की बात की गई है. क्या बात है वो हम प्रतीक से बहुत क्विकली इन द नेक्स्ट 2 or 3 minutes, Prateek, if you can put your points forth. Yes. Thank you very much for hosting this space, and I will speak primarily in English. I don't think my Hindi is production ready. No problem. So you may have to translate. I'll come to duties. I want to hit on one or two points quickly. Before that, I think the speakers before me have all touched on the key issues of the bill. So just a few points to supplement. One, overall, in terms of the approach of the bill, if you look at the preamble of the bill, it starts off with the phrase to provide for processing of digital personal data in a manner that recognizes both, and it goes on rights of individuals and talking about balancing the need to balance those rights, right? So my first contention is that this should not be called a data protection bill. It should be called a data processing bill. And I think a lot of people have already pointed this out. But it is in a way, in terms of its approach and framing, looking at it from the perspective of not information privacy or data protection, but how to enable processing, right? So it is not the Amrit Kal that we wanted. It is something else. The second point I just want to make quickly is on the consultation. I think that multiple people have touched on how that was an issue. I'll just supplement that with saying that there's a lot of noise being made about how 45 departments gave comments, and there were 21,666 comments that came in through the process, which, mind you, was English only. Had to be done through the MyGov portal, which required identification to submit comments, and had arbitrary restriction that you had to give chapter-wise feedback, and they were limited to 2,500 characters. But the key point is that just having a number of responses does not make a wide or an exhaustive consultation. As has been pointed out, a lot of groups were not really called for their views to be heard, and we don't know, in terms of the lack of transparency from the department or from the ministry, what type of comments were received, who made what representation, and how that translated into changes into the bill. None of that is clear to us at this point. They've even denied this under RTI request, saying that at the time of the consultation, we said we will not put out these responses. Therefore, we are not putting out these responses. So I'll very quickly now come to the duties, and this is a very interesting innovation, I guess, from now that we are officially in Kartavya Kal. I think to our knowledge, no other data protection legislation around the world has this. And it has a number of interesting duties, and then also imposes penalties of 10,000 rupees on individuals for not following those duties. The first of which is that you have to comply with provisions of all applicable laws for the time being in force to be able to exercise your rights under this law or this bill, or whenever it becomes an act. You cannot impersonate another person. You cannot suppress any information for any document, unique identifier, proof of identity, or proof of address issued. Now there is some change and some this thing in terms of who this applies to, whether this applies only to state or its instrumentalities, or to anyone who comes and asks you for this information. But then it is important, as had been pointed out, how right to erasure is restricted when it comes to state instrumentalities, effectively saying that you cannot ask the state to remove any of your information once it collects it. It will use it in whatever way it wants, and you also cannot suppress information from the state, or you cannot withhold any information from the state. So, which goes back to the pen pencil draw comic that Apar also referred. And it seemed like it was a pretty apt description of
of the situation. And just the last duty that I want to touch on is about not registering false or frivolous grievances or complaints with the data fiduciary or the board. I think we've already discussed at length how the board is not really an independent institution. It is controlled by the executive. If you take into account the general lack of trust in appellate processes I think in the country, then you're looking at the fact that anything may be defined or deemed a false or frivolous complaint, and then you could be fined for it. So you're disincentivizing anyone from even exercising their rights under the bill. That whatever limited rights it gives you, you're also Right. disincentivizing people from taking that. I'll pause there. थैंक यू वेरी मच प्रतीक। प्रतीक ने बहुत हमें दो चीज़ों के बारे में अलर्ट किया है। पहली चीज़ ये कि इस तरीके का जो कानून जो लाया जा रहा है, जो सबके अधिकारों को इम्पैक्ट करता है, इसमें कैसे कंसल्टेशन जो थी वो भी पूरी तरह से गोपनीय रखी गई। किसके साथ चर्चा हुई ये तक नहीं बताया गया। कमिटी जो मेटी है, उन्होंने जो कंसल्टेशन की कॉल दी थी, उसमें ये कहा गया कि हम बताएंगे नहीं कि किसके साथ हम कंसल्टेशन कर रहे हैं। द होल जिस तरीके की गोपनीयता हम देख रहे हैं इस सरकार में जब वो बिल्स को ला रहे हैं, वो अपने आप में ही बहुत कंसर्निंग है और बहुत ही हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जानने का जो अधिकार है, उसके ऊपर प्रहार है। आपने ये भी बताया कि लोगों पर जिनका डेटा इकट्ठा किया जाना है, ये शायद एकमात्र कानून है। अभी तक कहीं पे भी किसी और देश में ऐसा प्रावधान नहीं देखा गया है। इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि जिसका सूचना इकट्ठी की जा रही है, उन्हीं पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगने का पेनल्टी लगने का क्लॉज है। अगर वो अपना डेटा पूरा नहीं देते, वो अपनी कंप्लेंट अगर जो करते हैं वो फ्रिवलेस होती है कंप्लेंट। अब हम तो जानते हैं कि अगर एक वृद्ध महिला अपनी पेंशन की बात करती हैं, तो कोई सरकार में बैठे हुए कह सकते हैं कि आप 200 रुपए के लिए आप कंप्लेंट डाल रही हैं, तो बिल्कुल फ्रिवलेस बात है। लेकिन उनके लिए तो इट कैन बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो फ्रिवलेस कैसे डिफाइन किया जाए, वो अपने आप में ही एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक मुद्दा रहा है। और अब इस कानून में अब लाया जा रहा है कि फ्रिवलेस कंप्लेंट अगर आप कर देंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। एंड आई रिक्वेस्ट नाउ नितिन सेठी, इफ यू कुड नितिन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रिपोर्टर्स कलेक्टिव पे इस तरीके के कानून का आपको क्या लगता है असर होगा? जो काम आप करते हैं जिस तरीके का अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड भी, इफ यू कुड प्लीज शेयर विद अस ओवर द नेक्स्ट 3 मिनट्स नितिन। जी शुक्रिया, थैंक यू यहाँ रखने के लिए। आई थिंक जो आप मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं बहुत सीरियस है। हम जैसे पत्रकारों के लिए, और कई पत्रकार ऐसे हैं जो आरटीआई का इस्तेमाल करते रहे। हम लोगों का रिपोर्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस करता है, तो उसमें आरटीआई का बहुत साल इस्तेमाल करता है सच्चाई बाहर लाने में। और हम पिछले 2-4 साल से देख ही रहे थे कि आरटीआई की एक तरीके से टांग तो तोड़ दी गई थी। ये जो बिल में अब प्रावधान दिए हैं, इससे मुझे लगता है आरटीआई की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर करी जा रही है। अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं जिसमें आरटीआई के द्वारा, तो एक तरीके से सोचिए सिर्फ 10 या 20 रुपए देके हमने हजारों करोड़ के स्कैम्स किसने किया, किस धंधे, किस बिजनेस ने उससे मुनाफा कमाया, किन अफसरों ने किसी कंपनी को, कॉरपोरेट को या इंडिविजुअल को नाजायज फायदा उठाया, ये सब इंफॉर्मेशन हम आरटीआई से निकाल पाते थे। सरकार फिर भी रोकती थी, लेकिन आड़े टेढ़ा करके हम ये इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे थे। अगर जो अब प्रावधान सजेस्ट किए जा रहे हैं, इसको ब्यूरोक्रेसी और सरकार एक एक्सट्रीम एंड पे ले जाए, तो हमें किसी के नाम नहीं पता चले। हमें पता इतना शायद फिर भी चल जाए कि कुछ गड़बड़ हुई, पर किसने करी और किसके फायदे के लिए करी, ये सब चीजें हम गायब होने लग जाएंगी। तो इसके बाद मुझे तो लगता है कि एक तरीके से जो 2005 के इस कानून के बाद जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म को एक बहुत पुश मिला था इंडिया में और बहुत पावर मिली थी,
एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्रयास है ये। क्योंकि अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि सरकार में कौन लोग किसके फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, तो फिर इसमें जवाबदेही सरकार की कैसे बनेगी। और ये आरटीआई एक्ट में हम जानते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत सालों से जानता हूं कि कई प्रयास हो चुके हैं इस पे प्रहार करने के, पर ये एक साइड से और एक तरफा चुपचाप वार करके आरटीआई एक्ट को मेरे ख्याल से खोखला करने का प्रयास है, और जो बहुत घातक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए और हमारे किस्म के जर्नलिज्म जो हम रिपोर्टर्स कलेक्टिव में करते हैं उसके लिए तो जरूरी बहुत मुश्किल पैदा करेगा। शुक्रिया अंजलि। थैंक यू वेरी मच नितिन। और आपने जो सारी बातें रखी, किस तरीके से ये जर्नलिस्ट्स का जो काम है, स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स का काम, किस तरह से उसे रोकने का काम ये जो अमेंडमेंट्स हैं कर सकते हैं, संशोधन जो है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट हैज kept for itself the powers to decide who will not be a fiduciary under this, and has not carved out any clear exemptions for journalists, for researchers under this law. And there is a whole host of people who are doing very powerful work of holding the government to account by accessing information under the RTI law, and journalists who are showing truth to power through that. And if the government does not want to allow them to function by since they are going to be made data fiduciaries under this law, and under the law the Data Protection Board can impose very heavy penalties up to 500 crore rupees. This could be a way to paralyze their working. Those who are accessing personal information, either through the RTI Act, but now even through surveys, through work on the ground, investigative work, if they are if there is a complaint against them of violation of this law, the Data Protection Board could take very strong action against them, which could virtually paralyze. So this is a very important issue. We also have with us Mr. Shamlal Yadav. हमारे साथ श्यामलाल यादव जी भी जुड़े हैं। श्यामलाल जी, अगर आप अपना इनविटेशन टू स्पीक को एक्सेप्ट कर लें, एंड इफ यू कैन स्पीक टू अस फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, एंड यू कैन टेल अस आप क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, और इस कानून के आने से जिस तरीके का काम आप करते आए हैं एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उस पर क्या असर पड़ेगा, दैट वुड बी वंडरफुल। श्यामलाल जी, इफ यू कैन प्लीज एक्सेप्ट आवर इनविटेशन टू स्पीक. Okay. Can I then request Mansi? Mansi, if you can please speak and talk to us about how this bill is being pushed through in Parliament and the worries that people have about it being made into a money bill. Mansi, can you hear me? Mansi? Okay, we can then move to the next speaker if Mansi is experiencing some problem in unmuting herself. I'll request Ria to please okay, I think Mansi has managed to unmute herself. Mansi, can you hear me? Yes, can you hear me now? Yes, I can. Mansi, in the next 2 to 3 minutes, if you can just walk us through what is happening in Parliament and this entire debate that we are seeing on whether this bill is a money bill, a finance bill, what is the difference, how can the government try and push it Right. through?
Okay, thank you. As we all know, the bill was introduced in Parliament in Lok Sabha last week amid a lot of opposition. And one of the points on which the opposition MPs were objecting to the introduction of the bill was that it has been categorized as a financial bill. So now, to very quickly explain why there are fears of it being converted into a money bill, and then we might see the whole repeat of what happened with the Aadhaar Act. So the fear here is that basically the Constitution speaks about two kinds of financial bills. What's important to understand is that not every kind of financial bill is a money bill. So there are financial bills which cannot be categorized as a money bill at all. These are the kind of financial bills which find a mention in Article 117.3. Article 117.3 says that if there is a bill which, when it becomes operational, will require some expenditure from the Consolidated Fund of India, and there are numerous bills which require the government to make some expenditure from the Consolidated Fund of India. Even in this session itself, in the monsoon session itself, as many as 8 financial bills have been introduced so far, and all of these require some or the other kind of expenditure to be made from the Consolidated Fund of India. But what is interesting to note is that while all of these bills will require a recommendation from the president before they can be considered by the House, so they can be introduced, a bill which requires some expenditure to be made from the Consolidated Fund of India can be introduced in either House of Parliament. And there are examples of financial bills being introduced in Rajya Sabha as well. Both the Houses of Parliament have equal powers to amend those bills also. So there is no limit on the power of Rajya Sabha to amend a financial bill which simply requires some expenditure from Consolidated Fund of India. However, there is another category of financial bills which find a mention in Article 117.1. These are the kind of financial bills which have the characteristics of a money bill. So, for instance, as some of us know, money bill is defined under Article 110, and it lists 5-6 categories. If any of those, if there is a bill which deals with any of those categories, like for instance, it talks about imposition of a new tax. So if there is a bill which is imposing a new tax on us, it will become a money bill. It might become a money bill. If there is a bill which is regulating how the government borrows money, it might become a money bill. If there is a bill which sort of lays down appropriation of funds, or which talks about charged expenditure. Charged expenditure is the mandatory expenditure by the government. Like for instance, the interest that the government needs to pay on the borrowings it has done, or salaries of judges, etc., which are mandatory expenditure. The government cannot bow out of it, and these are not discretionary. The parliament also doesn't vote on them. So these are charged expenditure. So there are these categories. If a bill provides for any of these categories, Article 117.1 says that such a bill can only be introduced in Lok Sabha after the president recommends that it be introduced under Article 117.1. Once such a bill has been introduced in Lok Sabha under Article 117.1, then it opens the possibility of the speaker categorizing it as a money bill later, which means, again, coming back to my original point, not every financial bill is a money bill. The real mischief lies in whether it is introduced under Article 117.1 or not. If it is a bill like under the Data Protection Bill, it provides for setting up of a data protection board. The government will need to incur some expenditure for the functioning of the board. So it requires some expenditure to be made from the Consolidated Fund of India, but it does not have any other characteristic of a money bill. Therefore, there was no need to introduce it under Article 117.1, which is the case. So it has been introduced under Article 117.1, which now opens the possibility of it being categorized as a money bill later. Now, another very quick point that I will say on this is that while introducing it, the minister made a statement on the floor of Lok Sabha that where he tried to address these fears. And he said that it is a general bill, it is not a financial bill.
One, if it was a general bill as the minister is claiming, then the minister should not have introduced it under Article 117(1), and all of this controversy would not have arrived. But just because the minister has given a statement on the floor of the House, it does not prevent the speaker from categorizing it as a money bill later. The powers of the speaker to certify it as a money bill under the Constitution are very extensive, and some statement made by the minister on the floor of the House cannot prevent the speaker from doing so. So the risk of the DPDP bill being converted into a money bill after it has been passed by Lok Sabha, depending on whatever political calculations the government might do about how the kind of opposition they might face in Rajya Sabha, so that risk still stands. Right. राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। मेरे ख्याल से ये एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि ये एकदम से बात उठी थी कि ये बिल जो है ये मनी बिल के रूप में लाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि जो अपर हाउस है, राज्यसभा है, उसमें इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट जिस टाइप का होना चाहिए और वोटिंग जो है वो वोटिंग नहीं होने की जरूरत। अब जब ये बात उठाई गई पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जब मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे बिल को, तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं, हम इसको मनी बिल के रूप में नहीं ला रहे, जनरल बिल के रूप में ला रहे हैं। पर जो मानसी हमें बता रही हैं, ये फाइनेंस बिल के रूप में लाया गया है, जिससे कि किसी भी समय पर डिस्कशन और पैसेज के बाद में स्पीकर जो हैं वो एक मनी बिल डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि राज्यसभा में इस पर वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकार जिसकी बहुमत इन एनी केस लोकसभा में है, और वैसे भी हम देख रहे हैं किस तरीके से बिल्स को रैम थ्रू किया जा रहा है, वो बहुत आसानी से मुमकिन हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2-3 मिनट में अपनी बात शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ शेयर करें। मध्य प्रदेश में आप बहुत सक्रिय रूप से सूचना के अधिकार कानून पर काम करते आए हैं। इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ शिवानंद जी, और अपनी बात अगर आप रखें अगले 2-3 मिनट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, और अमृता जी को धन्यवाद। सम्मानीय राहुल सिंह सर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद। और यहाँ पर अभी तक हमारे बीच में जो भी गणमान्य स्पीकरों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, और जुड़े हुए हमारे सभी अन्य साथीगण और जो भी इसको कार्यक्रम को सुन रहे हैं। देखिए, इसके विषय में आप लोगों ने विस्तार से काफ़ी चर्चा की है, एक्सपर्ट्स ने अपनी बातें रखी हुई हैं, तो हमें लगता नहीं कि हमें इसमें कुछ विशेष और कहने की ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने पर्सनल ग्राउंड लेवल कुछ अनुभव रखना चाहूँगा, जिस पर आप लोग विचार करिए। और विशेष तौर पे हम इसमें एक बात ये कहना चाहेंगे कि हम तो इसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार के तो लोग ठीक है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, उनके जुबान से कहीं कोई शब्द नहीं निकले हैं। अभी हमने हाल ही में एक संजय सिंह जी का, आम आदमी पार्टी का, उनका एक वक्तव्य राज्यसभा में सुना था, जिस पर उन्होंने बड़े ही प्रभावी ढंग से इसके दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा की थी, और कैसे आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है। बाकी मुझे लगता है कि जैसे सभी को एक तरह से सांप सूंघ गया है, या पूरी तरह से मोदी जी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से सरेंडर हो गए हैं। ये बहुत दुखद है लोकतंत्र के लिए। एक्चुअली गड़बड़ी यहाँ से प्रारंभ होती है। हम आप चर्चा कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारी आपकी आवाज कितनी सुनी जाएगी, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, और कितना होगा वो तो ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जब से इसको माईटी में अपलोड किया गया था, तब से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा एक संडे का वेबिनार होता है 11 बजे से 1 के बीच में, हमने रिपीटेडली कम से कम दर्जन भर बार इस कार्यक्रम को रखा है। और अभी पिछले ही संडे को जब माननीय शैलेश सर वापस यूएस से आए, तो उनके कहने पर इस पर हम लोगों ने चर्चा की हुई है, और बातें आती रहती हैं। तो ये बहुत ही दुखद है डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के लिए, और ये जो पूरा एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है इसके लिए। कुछ अनुभव मैं बताऊंगा कि जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता हूं लोगों के बेसिक मूलभूत अधिकारों के लिए, और हमने कुछ मामले जैसे उठाए हुए हैं। माननीय राहुल सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, शुक्र है कि उनके जैसे सूचना आयुक्त हमारे मध्य प्रदेश में है, जो अभी भी बहुत ही प्रभावी ढंग से जब हम लोग
पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज रखते हैं या जैसी भी इंफॉर्मेशन जो देने योग्य है उसको दिलवाने में भरपूर मदद करते हैं, सबकी, हर किसी की, और उनके निर्णय आज बेहतर ढंग से जाने जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एक खिलाड़ी कोल का राशन का प्रॉब्लम था, वो 60 वर्ष का बुजुर्ग था। उनका मैंने एक आरटीआई, उनसे आरटीआई लगाते नहीं बनता था, वो जानते नहीं थे आरटीआई क्या है, वो अंगूठा लगाने वाले व्यक्ति हैं, उनका आरटीआई हमने लगाया था। 48 आवर्स की लाइफ लिबर्टी की जानकारी मांगी थी, वो जानकारी आई, और उसके साथ साथ उस राशन की दुकान की वो जानकारी आई जिसमें ये पता चला कि लगभग 200 से 250 लोगों का राशन पिछले कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। और फिर उस पर एफआईआर हुई, अभी भी कार्रवाई चल रही है। और एक उसी से संदर्भ में कुछ इंफॉर्मेशन हिडन थी जो नहीं दी गई। फिर अभी भोपाल से जो खाद्य विभाग के जो वहां पर एनआईसी बोर्ड के इनके जो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के लोग हैं, उनको जब समन किया गया तो ऐसी जानकारी सामने आई जो डेटा खाद्य विभाग के मतलब सेंस में बोले तो डिलीट हो गया था, लेकिन वो सर्वर में पड़ा हुआ था और एनआईसी के एक्सपर्ट ने वो जानकारी उपलब्ध करवाई, उसमें और नए खुलासे हुए। सवाल यह है कि इसी तरह से बहुत सारे गरीबों से संबंधित राशन की, पेंशन की जानकारी, जैसा कि आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, चर्चा भी हो रही है, ये सारी जानकारियां हम लोगों ने निरंतर हासिल की है और लोगों की मदद की है। अब इस बिल के बाद क्या, हम कैसे उनकी मदद कर पाएंगे? सामाजिक मुद्दे तो ठीक है, हम उठाते रहते हैं, उठाते रहेंगे सरफेस के तौर पे, लेकिन यदि किसी को उसका अधिकार दिलवाना है तो हम इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर पाएंगे? क्योंकि ये डीपीडीपी बिल जो है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, आरटीआई कानून को बहुत ही जी, गलत ढंग से अमेंड कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा यहाँ पे। धन्यवाद समय देने के लिए। और भी हमारे साथी हैं जो यहाँ पे बोलेंगे। धन्यवाद आपका, अंजलि। Dhanyavad, Shivanand ji. I think the important issue of how people are using the RTI law to access information about their other rights like rations and which are being denied to them due to corruption, and then they are able to access it by asking for information under the RTI law, which includes personal information. And we, of course, have seen that some political parties did raise serious objections at the time of the introduction of the bill, but we really do hope that many more parties and many more members of parliament oppose this bill when it comes up for discussion and passage tomorrow and in the coming days. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी राज, जो हमारे राइट टू फूड कैंपेन से साथ में जुड़े हैं, हंगर सर्वे और इस तरीके की तमाम जो सर्वेज होते हैं जिसमें लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन एकत्रित करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज ऐसे तमाम सब सर्वेस में भी जुड़े रहे हैं, राइट टू फूड के सेक्रेटरी हैं। तो राज, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके आप 2 मिनट में अपनी बात रखें, सो दैट मोर पीपल कैन गेट अ चांस टू स्पीक। राज, अपने आप को आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? Otherwise, can I request Amrita to please speak to us over the next 2 minutes, please. So thank you. हाँ, राज, आप बोलिए। हाँ, प्लीज। जी, मैं बस थोड़े से समय में अपनी बात रखूंगा। शुक्रिया अंजलि। एंड ये बहुत ही जरूरी एक डिस्कशन रहा है ऑन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, और ये किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार पे एक सीधा हमला किया जा रहा है। वो सभी साथियों ने बात रखी है, लोगों ने बहुत ही जरूरी जो इसके एस्पेक्ट हैं उस पर बात रखी है। एंड जो एक सबसे बड़ा हमला हो रहा है वो जो एंटायर जो राइट्स बेस्ड कानून है और जो हमारे लोगों के अधिकार हैं उन पर एक सीधा हमला है। अगर हम देखें, वो सभी ने उस पर बात भी रखी, और किस प्रकार से लोगों द्वारा इन सारे कानूनों की रक्षा के लिए जो आवाज उठाई जाती थी उसमें सूचना का अधिकार और सूचना पाने की जो एक पूरी एक तरीका, एक सिस्टम रहा है, उस पर एक बड़ा हमला है, और उसे पूरी तरीके से तब्दील करने का एक जरिया इस बिल के जरिए लाया जा रहा है। तो उस तौर पे ये एक बहुत ही खतरनाक एक बिल है, और इसी वजह से इसको इस मतलब सीक्रेट रूप से और
कई कई तरीकों से लोगों से और जो हमारा लोकतांत्रिक एक ढांचा है, लोकसभा या राज्यसभा, हमारा पार्लियामेंट, उससे भी दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे जरूरी यही है कि इन बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस प्रकार से एक मतलब षड्यंत्र की तरह ये सारी चीजें की जा रही हैं। और थैंक जी, यू, बस यही बात। थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच। अमृता, अगर आप अपनी बात जोड़ें इन द नेक्स्ट 2 minutes प्लीज। जी, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक मैं यही बात जोड़ना चाह रही हूँ दैट अगर हम देखें आरटीआई के यूज को, सो प्रिटी मच मोस्ट आरटीआई एप्लीकेशंस में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आती ही है. If you look at the use of the RTI in terms of people seeking information about, I had applied for a passport, I had applied for a ration card, I had applied for a driving license or a scholarship. So anywhere where people have applied for a entitlement or for a document, a typical question that is asked is that please give me the name, designation and details of the official who was responsible for processing my application. So immediately that means we are looking at personal information. If we look at public infrastructure, we ask for details of the contractor, again personal information. Of course, if we look at welfare schemes, then we know abhi Shivanand Tiwari ne bhi jo example diya that in a lot of cases, especially among the poor and marginalized communities, चाहे वो गांव में रहते हो चाहे बस्तियों में रहते हो, उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खुद नहीं इतनी डिजिटल क्षमता या इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते कि वो खुद जानकारी ले पाए. तो कोई संगठन मदद करता है कि वो पूरे एरिया की जानकारी निकाल के लोगों तक पहुंचाए, या फिर कोई जो जानकार है वहां का व्यक्ति वो पूरे गांव की या पूरे बस्ती की जानकारी निकाल के, चाहे वो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज हो, चाहे वो ये हो कि किसको कितना मिला, वो जाके पेस्ट करते हैं. और जो पूरा एक सोशल ऑडिट की जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है थ्रू यूज ऑफ द आरटीआई, विच इज बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, वो सब भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब एक्सेस होती है तभी हो पाता है. तो कहीं ना कहीं पे ये जो मिनिस्टर का जो बयान है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई थिंक वो खुद में आपत्तिजनक है, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन includes the right to access personal information within certain safeguards. So I think it will have a huge impact on our ability to access information under the RTI. It will have a huge impact on public disclosures, चाहे नरेगा के हो चाहे फूड सिक्योरिटी के हो. और मैं यही फ्लैग करना चाह रही थी. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Amrita. There are several kinds of misconceptions that are being floated, including the fact that the right to information is not the right to seek personal information. And I think that if the experience of the last 17 years of the use of the RTI law is observed, it very much is people's right to access information, granular information, which includes personal data, to be able to hold the governments accountable. I'm going to request Ria, if you can unmute yourself. Ria, if you can hear us, please unmute yourself and speak for the next 2 minutes. Pravita, can you speak? I think Ria is unable to unmute herself. Sorry, can you hear me? Yes, yes. Sorry, I had some trouble with connectivity. I just wanted to add two things. Sorry, I'll speak in English if that's okay. So the first is we have to see the wide exemptions being granted in the light of the lack of surveillance reforms. When you look at clause 17, it grants various types of exemptions for various entities on powers that the central government can exercise. So 17.1 says certain types of fiduciaries for certain purposes are only required to adhere to one obligation, which is to store data securely. So if you're collecting for law and order purposes, there is no obligation to delete that data at any point. There is no obligation to allow people access to have information about how their data may be used, what data may have been collected about them. This is even more problematic in the light of other bills
like which I think Pravita may talk about, but bills like the Criminal Identification Amendment, which proposes to collect a large amount of data in the interest of law and order. The second thing I wanted to say is 17(2) is a huge carte blanche for the government to notify any instrumentality to collect data totally outside of the ambit of the Act. So, in essence, what the government is saying is totally handing over, a free right to any data that they may have collected on the grounds that that is listed in this provision. There's no oversight over how this power may be exercised. There is no guiding principles in terms of proportionality, in terms of fairness, in terms of even procedural fairness, in terms of how this power will be exercised. So, in the light of that, in addition to seeing how it encroaches on the right to transparency and information, as people have been discussing, these exemptions show that it's even this act that I think Pratik called the Data Processing Act, should be more appropriately called that, is very much encroaching on the right to privacy. Just one last point that I wanted to make is this power to request erasure is a really powerful right, which under 17(4), the government is the state and its instrumentalities are totally exempt from this. That's quite troubling, and there's jurisprudence from other contexts where which have gone into this question of if you collect data on people for a specific purpose, there has to be some guidance over how long this data is kept, right? And you can either request erasure or it should be erased after the purpose is met. So these are just the points I wanted to raise. Thank you. थैंक यू रिया. प्राविता, अगर आप अपनी बात प्लीज रखें 2 मिनट में. Pravita, can you hear me? Roli Shivhare. Hello, can you hear me? Yes, Pravita, I can hear you. Please अपनी बात जी रखें आप. सबको जिंदाबाद और गुड इवनिंग. मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक सब स्पीकर्स ने काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरह से हमें समझाया है और बताया है कि ये बिल में क्या क्या कमियां हैं और ये बिल इतना ख़तरनाक है हमारे लिए, हमारी सूचना के अधिकार के लिए और ऑल्सो हमारी निजता के अधिकार के लिए, जो प्राइवेसी है, दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं और ये बिल दोनों का उल्लंघन करता है. तो इनफैक्ट मुझे बस एक चीज़ कहना है, ये है कि हमें ये बिल के ऊपर क्या करना चाहिए. हम सबको पता है कि मंडे को पार्लियामेंट में बिल टेबल होगा, डिस्कशन होगा इस बिल पर. And I think one very important thing that we must all do is ask our MPs to raise the issues that have been raised today, to raise issues that we are concerned with, and to prevent the passage of this bill. Because as we have seen, it is riddled with problems and issues, and it should not be passed. If there's, I think the other speakers will cover, more aspects of the bill, but this is all I wanted to say. थैंक यू प्राविता. रोली शिवहरे, पंक्ति, जो सभी लोग सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान के हिस्सा हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात, अलग अलग राज्यों में काम भी कर रहे हैं इस बिल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. You've been sent invitations to speak. रोली, पंक्ति, अजय जहांगीर जी भी हैं हमारे साथ. अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहें तो प्लीज अनम्यूट करके बात रखें. मेरे ख्याल से कुछ लोगों को प्रॉब्लम विद कनेक्टिविटी है. श्यामलाल यादव जी, अगर आप कर पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट, प्लीज डू स्पीक टू अस.
डॉक्टर मुख्तार ने रिक्वेस्ट भेजा है टू स्पीक ऑल्सो. कैन यू हियर अस डॉक्टर मुख्तार? इफ यू वांट टू unmute yourself. कोई यश श्रीकांत जी. हेलो अंजलि जी. पंक्ति प्लीज बोलिए. या जैसे सबने बताया वो तो रिपीट नहीं करूंगी, बट एक बात, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन कानून आने के बाद जितने कानून आए हैं उसमें इनबिल्ट ट्रांसपेरेंसी का प्रोविजन था, और उसकी वजह से हमें ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, बी इट नरेगा, बी इट राइट टू फूड कैंपेन, राइट टू फूड एक्ट हमें दिखते हैं, और उसकी वजह से सोशल ऑडिट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजबूत हुआ, और सोशल ऑडिट हो पाया काफी सारी जगहों पे. ये सभी जो बड़े प्रोग्राम्स हैं पब्लिक फंड को यूज करते हैं उसको लेके. सो वी हैव एज ऑन टुडे अ ह्यूज डेटा रिलेटेड टू नरेगा फूड which is used to make system accountable when it is not delivering, and most of the time it has serious problem of delivering it. लेकिन इस कानून में जिस तरीके से ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक भय है कि जितने भी पब्लिक डोमेन में इस तरीके से डेटा है जो हम सोशल ऑडिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एडवोकेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सभी भी शायद इससे पब्लिक डोमेन से गायब हो जाएंगे, और या होंगे तो भी हम इसको यूज जब करेंगे तब एक पाबंदी हमारे ऊपर आ जाएगी. तो ये एक्चुअली एक मतलब एडवोकेसी की स्पेस को बहुत लिमिट करता है ये बिल, इतना मैं कहना चाहूंगी. थैंक यू पंक्ति. श्रीनिवास कोडाली जी हैं, अगर आप अपनी बात रखना चाहें श्रीनिवास. Can you hear me, Srinivas? बट एक बात कहना चाहता हूं मैं. द डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आ रहा है, इट्स कमिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, राइट? लाइक हर कोई भी गवर्नेंस एक्टिविटी जो है पूरा डिजिटाइज हो रहा है. आरटीआई का जो प्रोविजंस द बिल थे, इट वर्कड रियली ग्रेट वेल इन ऑफलाइन वर्ल्ड, बट अभी ये डिजिटल इंडिया के जो प्रोविजंस है, जैसे आप आधार में लिंक किया जा रहा है, एवरीथिंग इज डिजिटल, ई ऑफिस है, सब कुछ डिजिटाइज हो गया है, पेपर में कुछ नहीं है या कम होते जा रहा है. एंड इवेंचुअली दे वांट टू डिक्रीज इट एंटायरली कि पेपर नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन ही होना चाहिए, सब कुछ कंप्यूटर में रहना चाहिए, सब कुछ सॉफ्टवेयर में रहना है, सब कुछ सर्वर में ही रहना है. तो इस तहत there is a need to evolve the understanding of information access in the digital realm. This has been something that we have been trying to do for the last few years. The bill mein ye problem hai. I mean, while it denies us the personal information, it also denies us how these systems are functioning. कि लोगों को बताना चाहिए कि आपका डेटा कैसे प्रोसेस किया जाता है, वेदर इट इज फॉर सब्सिडी डिलीवरी, स्कॉलरशिप, कुछ भी है. ये प्रोविजन जो है ये भी इट्स नॉट इनटू द बिल, राइट? इट्स नॉट बेक्ड इनटू द बिल. एंड बिकॉज ऑफ ये सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन किया जा रहा है, उसके वजह से वी आर फीलिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स. एंड आइडियल एक बिल में इसको मिनिमाइज करते हुए वी हैव टू बी टोल्ड कि
क्या कर रही है डिजिटल इंडिया में, आपको कैसे गवर्न किया जा रहा है, लोगों का डेटा गवर्नमेंट कैसे यूज किया जा रहा है, ये कहीं पे भी नहीं है। सर्वेलेंस की बात अलग है, दैट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विथ हाउ ये डेटा को लेकर लोगों के ऊपर केसेस भी रख सकते हैं, सर्वेलेंस रख सकते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर देयर वाज आल्सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्वेलेंस इन द पास्ट, बट द प्राइमरी चैलेंज बीइंग कि डिजिटल इंडिया जो है पूरा इनविजिबल हो रहा है आम आदमी के लिए। दैट हैज बीन द क्रक्स जी ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि जब टेक्नोलॉजी पेपर को डिजिटाइज कर रहा है, लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। हमें ये बोला जाता है कि वो कंप्यूटर में है, और हमें ये कहा जाता है कि आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आता है। एंड द ओनली वे टू डीमिस्टिफाई दिस, कि लोगों को कैसे बताया जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये कुछ मैजिक नहीं है, ये इट्स बीन डिजाइंड, इसको ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि लोगों को कुछ समझ में ना आए। और ये बिल्स भी उसी तरह लेके आ रहे हैं जिसमें लोगों को कुछ समझ में ना आए कि डिजिटल इंडिया है क्या। एंड जब तक वी लुक इनटू द क्रक्स ऑफ दिस इश्यू कि डिजिटल इंडिया का एम क्या है, जैसे कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जा रहा है, लोगों को हम बता नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है गवर्नेंस में। एंड वाइल ये बिल is bringing us together to talk about the issue of bill and in the context of RTI, I'm hoping we continue to evolve this in that direction कि कैसे digitization as a whole जी governance को invisible कर रहा है। right. Thank you so much. Thank you, Srinivas. And can I request Suresh Adiga to please say a few words? We are running uh, out of time, unfortunately. But Suresh has been doing a Call Your MP campaign where people are calling up their members of parliament, urging them to take up these issues on the floor of the house. सुरेश, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज और अपनी बात रखें अबाउट दिस कैंपेन दैट यू हैव बीन रनिंग. Okay, I think Suresh is not been able to. Hi, Anjali and Mr. Srikanth. While we're waiting, I just want to raise one quick point about Sure. one Yes, exemption on very the quick. bill. So we all know the RTI struggle behind the willful defaulters disclosure, which ran up to the Supreme Court, and after 5 years we had a list. But this current bill actually has an exemption clause where the provisions of the data protection bill does not apply if a person is a defaulter, and default is cited as in how it's defined in the insolvency and bankruptcy code. Now this has two ramifications: one at an individual level, where practically now a very large chunk of population do have loans. People do default just by missing one due date and stuff like that. And we also have people having loan accounts without their knowledge because of this Aadhaar and other cyber issues. But what this essentially will mean that banks and other financial institutions will have full access to individuals' data without consent, because the exemption grants now the financial institutions an exemption to avoid or like give the protection under this bill. So which essentially means that individuals are who have a loan and who have defaulted for some reason do not get any rights that are mentioned in this bill. And this on the other side, where since this is a person, and a person could also be
an entity run by the state, say Food Corporation of India and so on. Now, if and we know that many large public sector undertakings or some of these quasi-governmental organizations do have significant debt, and what this means is that these entities' data will also be freely available to financial institutions, and this kind of poses like a bank-led privatization as against a government-led privatization, and that could kind of affect a very large chunk of population in very many spheres. So I just want to quickly flag these two things. Thank you. Thank you very much. Thank you, Srinivas. Sorry, Shrikant, thank you very much. I'm afraid we are out of time now. हमारे सारे वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी and we could not accommodate them today, deepest apologies to them. We have already run out of time, unfortunately. But मेरे ख्याल से जो बहुत important issues निकल के आए हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, जो खामियां हैं उनको लेकर, we hope that these will find their way into the debates, discussions in Parliament, and this bill does not get passed in its current form, because as we have heard in very great detail today, if the bill comes in its current form, it will dilute, it will weaken our right to information without protecting our right to privacy. It will empower the central government and disempower citizens who have been using information to hold governments accountable. We don't want a democracy where people are disempowered and the central government has the power to control people's data. Thank you very much, and we'll now be closing this space. Thank you.